Sure. Hello everyone. Welcome to Unacademy. Just give me a second. Very nice. So let's start today's session. लेकिन पहले guys, I welcome all of you to Unacademy CAT YouTube channel, obviously, for your CAT and preparation. I hope I'm live. Yes, I'm live. Great. So we conduct relevant sessions for CAT and OMETs. So and links of all the sessions that we conduct either on YouTube or on Unacademy Learner app for CAT and OMETs. We provide the same link on this official Telegram channel. You guys can join it by scanning the QR code. Also, the link of the Telegram is pinned in description. आप वहां से भी join कर सकते हैं. I welcome all of you to this best DILR Sets series. These are hand-picked sets from CAT PYQs, the very good ones, tricky ones, and these series of sessions will give you idea what actual paper would look like. Chalo, let's move ahead. Uh, welcome Karan, welcome everybody. चलो लेकिन पहले गाइस क्विकली एक दो important notifications or informations. We are offering flat 25% discount and extension on our 6-month subscription. You can check out the pricing. Also, we are offering flat 40% discount on 18-month subscription. You can check out the prices. So 6 months plus 2 months, 8 months का आपको 19,500 में मिल जाएगा and 18 months का 21,000 में आपको मिल जाएगा based on your requirement. You are targeting CAT 23 और CAT 2024 based on the requirement आप subscribe कर सकते हैं. Speaking of batches, the batches that we have launched recently, we will be launching 2 batches on 15th. एक है night batch. I'm taking DLR in it, and there is this build the cat batch starting again on June 15th. Again, I'm taking DLR in it. These batches are self-sufficient to score more than 99% type if you follow them strictly. Okay, chat मुझे नहीं दिख रही है शायद आप कुछ बोल नहीं रहे या फिर I don't know what is the reason. गर्मी बहुत है. चलो. Very nice. Okay guys, so set for today. This is the set that we are going to discuss. Okay, a very good set. Let's read it out. I'll give you 2 minutes to read it out. Okay, actually, I'll give you 2 minutes to read it out first, and then we will solve this together. Hello, new trailer launcher. So in this question, there was this old lady who had the following assets. Hello, Abhishek. There was this old lady which had the following assets. एक था उसके पास 70 lakh cash बैंक में. She had a house worth 50 lakhs and she had 3 flats each worth 30 lakhs. And also she had certain number of gold coins. Each coin was worth 1 lakh. Okay, I don't know how many coins she had. Okay, so certain number of gold coins. Each coin, the value of each coin was 1 lakh. So अगर उसके पास 10 coin थे, अगर 10 coin थे, तो value was 10 lakhs. Accordingly. Now, we are not sure. Let us say that she had, कहीं कोई number mentioned है question में? So let us say she had X coins. Okay. Let us say she had X coins, मतलब X lakhs की value है. कोई भी value question में नहीं given है number of gold coins के लिए. Now, moving ahead, she wanted to distribute her assets among the 3 children, Nita, Sita and Geeta. Nita, Sita and Geeta. The house, any of the flats or any of the coins were not to be split. Very nice. So what they are saying कि ऐसा नहीं है कि house में आगे का कमरा तुम ले लो, पीछे का कमरा तुम ले लो. Flat में एक रूम तुम ले लो, एक रूम तुम ले लो. नहीं. House entirely as an asset will go to one of the child. Flat entirely as an asset will go to the another child, or maybe the same child,
but you are not going to split an entity of house, an entity of flat, at least for house and flats. This is what is mentioned in the question. Okay, the house, any of the flats, or any of the coins were not to be split. Coins may be, suppose एक coin है worth 1,00,000 rupees, तो इसमें से 20,000 तुम ले लो, 30,000 तुम ले लो, 50,000 तुम ले लो, नहीं. कॉइन का यूनिट क्या रहेगा? एक कॉइन, 2 कॉइन, 3 कॉइन, 4 कॉइन. यू आर नॉट गोइंग टू स्प्लिट कॉइन्स एज वेल. Sure, very nice. Now, question. That is, the house went entirely to one child. Yes, we discussed this. A flat went to one child, and similarly, a gold coin went to one child. This is what we discussed right now. Among the three, Neeta received the least amount in bank deposit. So, कोई एक जो बंदा है, assets include house, flat, and coins. Okay. देखो एसेट की बात करोगे तो एसेट में 2 टाइप का है. ओके, एसेट मतलब क्या? एसेट मतलब हाँ, टोटल एसेट बोलोगे तो चारों ही एसेट है. वैसे तो टोटल एसेट बोलोगे तो चारों ही एसेट है. एसेट मतलब बैंक डिपॉजिट प्लस बैंक डिपॉजिट, हाउस, फ्लैट and coins. Together they are assets. Yes. Among the three, Neeta received the least amount in bank deposit, while Geeta received the highest. Achha, somebody can receive assets like she can receive cash, she can receive house or flat or coins, or maybe combination of one or more. Okay. So Neeta received the least amount in bank deposit and Geeta received the highest bank deposit. Bank deposit least किसको मिला? Bank deposit least किसको मिला? Neeta को, और Geeta को highest. The value of assets was distributed equally among the children as were the gold coins. Very nice. So these assets, the value, आपको total value निकालना होगा, and that value is equally distributed in all the 3 child, and also gold coins are also equally divided in all the 3 child. This is what they're saying. And now based on this they had 2 questions. Question 1, question 2. Question 3 के लिए they have given some additional data. 3 के लिए they have given additional data. Okay. 3 के लिए and 4 के लिए they have additional data. Data same है, 3rd और 4th का. So this is the habit of CAT. What they do कि एक सेट में 4 क्वेश्चन है, शुरू का 2 क्वेश्चन बेसिक, and then they give some additional data, and then remaining 2 questions you have to do some extra work to figure out the answer. Got it? No, this was the question. I hope I'm clear with the question. I'll give you like 5 minutes to attempt this. We'll start the discussion at 8:16. So we'll start the discussion at 8:17 को discussion start करेंगे, ठीक है? We'll start discussion at 8:17. तब तक आप थोड़ा सा हाथ पैर मार लो, ठीक है? And those who are watching this recording, आप पाउज कर लो, अटेम्प्ट कर लो, 6 मिनट स्किप करके वॉच इट. So I want to start my CAT journey from today itself, as because my academics issues is it possible to crack CAT, and my dream college is FMS. Only my maths is very weak. Please guide me best channel for quant. कितने सारे क्वेश्चन एक साथ पूछती है. पहला, you don't have any other option. कोई ऑप्शन है ही नहीं तुम्हारे पास, ठीक है? एक ही दूसरा ऑप्शन है टाइम वेस्ट करना जो तुम कर रहे हो श्याम. ओके, नो 3 and 4 का जो डेटा है that is limited to 3 and 4. 1 and 2 is individual. The data that you are seeing on the slide, ये डेटा है, that's it. Nothing else is required, nothing else is given. 3 and 4 का डेटा 3 and 4 में given है. Okay, they won't affect.
हाँ, तो एंड व्हाट आई सेड कि एक ही ऑप्शन है तुम्हारे पास, स्टार्ट वर्किंग। तुम्हारा जो भी सिचुएशन है, मैथ्स वीक है, इंग्लिश वीक है, एकेडमिक्स वीक है, तो क्या, तो भी तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है, स्टार्ट प्रिपेयरिंग। जितना होगा बेस्ट करो, और जितना कर सकते हो, एंड द बेस्ट वुड बी द आउटपुट। अभी वो कोई दूसरा ऑप्शन है क्या? ऐसा है क्या कि चलो सर नहीं करते प्रिपेयर? करना तो है ही प्रिपेयर। ओके, एफएमएस इज माई ड्रीम कॉलेज, सबका है ड्रीम कॉलेज। बेस्ट चैनल फॉर क्वांट अनअकैडमी कैट, जिस चैनल पे तुम हो। यहाँ पे रमन सर है, रौनक सर है, बेस्ट फैकल्टीज फॉर क्वांट। फॉलो देम, यू विल लर्न अ लॉट। बीएड के साथ काफी डैशिंग लगते हो। चलो गाइस, यू हैव सम टाइम, अटेम्प्ट इट। कोई ऑप्शन नहीं है गुरु तुम्हारे पास। करो प्रिपेयर, आंख बंद करो, शुरू करो। जिसका स्ट्रांग है उसको भी यही करना है, जिसका वीक है उसको भी यही करना है। ओके, करो प्रिपेयर। एफएमएस मिला तो एफएमएस, कोई और मिला तो कोई और, जो भी आपके पोटेंशियल से बेस्ट होगा वो लेकर निकल जाओ। काफी अच्छे कॉलेजेस हैं, जो भी बेस्ट होगा निकल जाओ, लेकिन आगे की बात है, इतना आगे का मत सोचो, अपना प्रिपरेशन शुरू कर दो अभी से। कैट है नवंबर में यार, कैट के बाद ओमेट्स आता है, मतलब एग्जाम फरवरी मार्च तक चलते रहते हैं। सीमैट एमएचसीटी तो इस बार काफी लेट हुआ। If you'll prepare, there is a way. If you'll not, there is no way out. Cholo boys, it's a very good question. Attempted. You guys have close to 2 minutes. Is it worth to watch it? No. The idea should be कि आप जहाँ पे भी हो वहां से शुरू करो, कंटिन्यू करो, और बैकलॉग को साइड बाय साइड एक्स्ट्रा टाइम निकाल के कंप्लीट करो। ऑल्सो आई एम स्टार्टिंग अ बैच ऑन 17th को, हम स्टार्टिंग एलआर बैच स्क्रैच से, तो फ्रेश ही है ना। और जहां से भी कर रहे हो ना वहां से कंटिन्यू करो, और जो बैकलॉग है उसको धीरे धीरे करके फिनिश कर लो। इट्स वर्थ वॉचिंग श्याम। ओके, Abhishek Pal's answer should be 30. Uh-huh. Sorry, 20. Abhishek says 20. अच्छा, इसे यूट्यूब तो फ्री ही रहता है ना? और क्या नाम है तुम्हारा? श्याम। यूट्यूब तो फ्री है, यूट्यूब पे है, सब फ्री है, आ जाओ ना। How many flats did Neeta receive? The second question, Abhishek. In case you have solved the first, I'm not sure if 20 is right or wrong. अच्छा, I'll consider आप 20 राइट है, प्रोवाइडेड अगर आप तीनों का बता दो बैंक डिपॉजिट। सीता, नीता और गीता तीनों का बैंक डिपॉजिट बता दो, तो I'll consider that you solved it right. सीता, नीता, गीता तीनों का बैंक डिपॉजिट बताओ। चलो, नीता, सीता, गीता। यू सेड नीता का है, सीता का यू आर सेइंग 20,
सीता के यू आर सेइंग 20, नीता और गीता का बता दो फिर। सर 30 होगा शायद। देखो, द फर्स्ट टिप for solving any of the DLR questions, specifically LR question, is language. You have to read the question. देखो, LR is solved in pictures. LR visualize करना पड़ता है, ठीक है? तो when you read any statement, उसका एक पिक्चराइजेशन करते जाओ, उसका एक पिक्चराइजेशन करते जाओ। अच्छा ठीक है, इसका ये मतलब है, ओके इसका ये मतलब है, ओके इसका ये मतलब है। Picturization is very important because LR is solved in pictures mostly. चलो लेट्स अटेम्प्ट द क्वेश्चन, द टाइम्स अप, डिस्कशन करते हैं इस क्वेश्चन को लेके। तो आई होप यू गाइस हैव रेड द क्वेश्चन। गीता मोर देन 23.33 एंड अरे नो, मास्टर ऑफ मैथ्स इज नॉट 15, 20, 30, अभिषेक पार 23.33, नो 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 नो। चलो लेट्स ट्राई दिस। सबसे पहले तो ये बात करते हैं, नंबर ऑफ कॉइन्स एक्स कॉइन्स है, ठीक है? व्हाट इज द टोटल एसेट्स? टोटल एसेट कितना है? टोटल एसेट्स तो 70 कैश, 50 फॉर अ हाउस, 90 फॉर 3 फ्लैट्स एंड एक्स कॉइन्स। ओके, तो कितने हो गए बेटा ये 210 प्लस एक्स, 210 plus x, बोलो यस सर। दिस इज द टोटल एसेट्स। तो इंडिविजुअली कितना मिलेगा? व्हाट वुड बी शेयर ऑफ ईच ऑफ देम? तो इंडिविजुअल शेयर कितना हो गया इनका? शेयर ऑफ ईच चाइल्ड, शेयर ऑफ ईच चाइल्ड कितना होगा छोटू? बोलो। नो, क्वेश्चन में गिवन है the value of assets was distributed equally among the children. So each child will be getting 70 plus x by 3. 70 plus x by 3. No, 70 plus x by 3 ना, master of maths। आप जब 210 plus x को 3 से डिवाइड करते हो तो that is 70 plus x by 3 होगा बेटा। ओके चलो, अच्छा ये x by 3 है, ऑसम। और यहाँ पे ये भी मेंशन्ड है, द गोल्ड कॉइन्स वर आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। द गोल्ड कॉइन्स वर आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। अच्छा, गोल्ड कॉइन्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, इसका मतलब हम क्या ले सकते हैं? गोल्ड कॉइन्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, गोल्ड कॉइन्स were distributed equally amongst three. Okay, we can definitely say that gold coins must be multiple of 3. Gold coins must be multiple of 3. Must be multiple of 3 बोल सकते हैं ना? Must be multiple of 3. गोल्ड कॉइन 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है, 12 हो सकता है, एंड सो ऑन। कुछ भी हो सकता है, बट इट हैज टू बी मल्टीपल ऑफ 3। तो वुडंट इट बी अ नाइस डिसीजन इफ वी अस्यूम 3x कॉइन्स इंस्टेड ऑफ x कॉइन्स? तो ये बेटर रहेगा ना कि हम इसको 3x अस्यूम कर लें, मतलब कैलकुलेशन में थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो टोटल एसेट कितना हो जाएगा बेटा? टोटल एसेट हो जाएगा, टोटल एसेट भी चेंज हो जाएगा। टोटल एसेट 3x यहाँ, 3x यहाँ, ईच विल गेट 70 प्लस x, एवरीबडी विल गेट 70 प्लस x। कैलकुलेशन थोड़ा सा बेटर हो जाता है। ये छोटी छोटी चीजें बहुत मायने रखते हैं। इनफैक्ट हर एक क्वेश्चन में अगर कोई वैल्यू किसी का मल्टीपल है तो इसी तरीके से अज्यूम करना। इफ इट वाज मल्टीपल ऑफ 7, आई वुड हैव अज्यूम्ड 7x। If number of gold coins was multiple of 15, I would have assumed 15x. This helps a lot. I don't want the calculations to be in fractions or percentages. I hate this. You should hate this. Yes. So now what we have done?
So we have assumed that total number of gold coins are 3x, equally distributed amongst 3 xxx, and each of the child will have a share of 70 plus x. Bolo yes sir. Bolo yes sir. Now A is one of Sita, Gita और नीता. B is one of Sita, Gita और नीता. C is one of Sita, Gita और नीता. मुझे पता नहीं A सीता है या गीता है या नीता है, मुझे नहीं पता. B का भी नहीं पता, C का भी नहीं पता. But I know that A has received 70 plus X. B has received 70 plus X. C has received 70 plus X. This is what I'm aware of. This is what I'm aware of. Okay, this is what I am aware of. चलो ओके, अब देखो और फरहान 17 से शुरू कर रहा हूँ, डेट फाइनल हो गया है, 17 से शुरू हो जाएगा वो, ठीक है. इसके 4 सेशन से चलते रहेंगे. अब देखो गोलू, अब बात करते हैं. अभी ये तो है गोल्ड कॉइन्स, ठीक है. ये तो I'm back now. चलो हाँ देखो. So okay, so A, B and C, I don't know who is A, who is B, who is C. The value of asset A, B and C would be receiving is 70 plus X, 70 plus X, 70 plus X. Okay, अच्छा इसको नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं. A, B, C. A is receiving 70 plus X. A is receiving 70 plus X. Oh, B is receiving 70 plus X and C is receiving 70 plus X. And this X is the gold part. And ये जो 70, 70, 70 है, ये नॉन गोल्ड पार्ट है. We can say like this. अब सोचो कि one of ये gold has been taken care of. One of the child must have gotten house. Yes or no? One of the child must have gotten house. Let us say A got house. Let us say A got house worth 50. X तो उसके पास गोल्ड है. रिमेनिंग 20 क्या हो सकता है? रिमेनिंग 20 टोटल है 70 प्लस एक्स. टोटल है 70 प्लस एक्स. टोटल इज 70 प्लस एक्स, जिसमें एक हाउस होगा 50 का ए के पास. ओके, एक्स तो गोल्ड कॉइन है. 20 वुड बी इन द फॉर्म ऑफ बैंक डिपॉजिट. 20 इज इन द फॉर्म ऑफ बैंक डिपॉजिट. यही पॉसिबिलिटी है ना? बोलो यस सर. हाउस हैज बीन टेकन केयर ऑफ. नाउ अनदर चाइल्ड, अगेन एक्स इज द गोल्ड पार्ट. 70 बी को मिला होगा इन फॉर्म्स ऑफ एसेट. तो 3 फ्लैट है. नाइदर बी नॉर सी कैन हैव 3 फ्लैट ऑन देयर ओन. नाइदर बी नॉर सी कैन बी असाइंड 3 फ्लैट्स. So I can say कि B has been given 2 flats and C को मिल गया होगा 1 flat. I don't know who is A, who is B, who is C. तो 2 flat is worth 60, 1 flat is worth 30. X तो gold coin है ही इनके पास. Now remaining 10 बैंक में मिला होगा, बैंक कैश to B, and इसके केस में remaining 40 बैंक में कितना मिला होगा बेटा? 40. बोलो यस सर. बोलो यस सर. Just give me a second. Let me remove my comments. चलो, if you guys are aligned to this, फटाफट लिख दो हैशटैग यस. अगर समझ रहा है तो लिखो हैशटैग समझा, और अगर डाउट आ रहा है तो लिखो हैशटैग डाउट. सो इस तरीके से इनको मिला होगा A, B and C को. It is very clearly mentioned that Neeta got
Nita received the least amount in bank deposits. Nita received the least amount in bank deposit. So bank deposit में least is Nita. So this must be Nita. B must be Nita because B has received the least in bank deposit. Geeta received the highest. Geeta received the highest. So C must be Geeta क्योंकि C has received the highest in bank. बोलो yes sir. Fine. And A Sita. A Sita. Very nice. And now you can answer the first two questions. How much did Sita receive in bank deposit? So Sita received 20 lakh in bank deposit. Sita received 20 lakh in bank deposit. How many flats Nita received? Nita received how many flats? Nita received 2 flats. Answer to the second question was 2. Nita received 2 flats. Bolo yes sir. Chalo. Now third and fourth के लिए they had this additional data. Third and fourth के लिए they had this additional data. Now additional data में क्या given था? That the value of assets distributed among NSG, Nita, Sita and Geeta was in the ratio 1:2:3. So ये वाला part null and void हो गया. कौन सा? The value of asset was distributed equally among the children. This data is null and void now because question solving के लिए उन्होंने question specific special data दिया है. So the value of assets distributed among Nita, Sita and Geeta was in the ratio 1:2:3 indicates now the value is not equally distributed. Very nice. We'll consider this one. We'll consider this one. Okay, ये वाला data consider करेंगे. And while the gold coins were distributed among them in the ratio 2:3:4. Gold coin. अच्छा, again speaking of which हम क्या करते हैं? सबसे पहले तो total asset निकालते हैं. What is total asset in this case? Total asset remains the same. Total assets remain same. Let us say X coins है. Total asset is 210 plus X, like we did in last question. Okay. Now this total asset according to the question number 3 is in the ratio 1:2:3. This total asset is divided in the ratio 1:2:3. This total asset is divided in the ratio 1:2:3, which means this total asset must be multiple of 6. This total asset must be multiple of 6. अगर ये total asset multiple of 6 है, wherein 210 is multiple of 6, X must be multiple of 6. X must be multiple of 6. What can we say about X? X is multiple of 6. Okay. Also, it is clearly mentioned that the gold coins distributed are in the ratio 2:3:4. केवल gold coins. This X is distributed in the ratio 2:3:4. मतलब X is multiple of 9 as well. 2, 3, 4. 2 plus 3 plus 4. X is multiple of 9 as well. X is multiple of 9 as well. So let us assume such value of X which is multiple of 6 and multiple of 9. So it's better to assume that total number of coins in this case is 18X instead of X. क्या होगा better assumption? 18X. 18X coins. बोलो yes sir. And this is a major breakthrough. This is a major breakthrough. The better you assume, the easier it gets. 210 plus 18X. Okay, let's solve this in the next page. Total assets here is 210 plus 18X. Okay, chalo. And Nita, Sita and Geeta. Nita, Sita and Geeta. They
received share in the ratio 1:2:3. So Neeta must have received, इसको 1:2:3 में आप डिवाइड करो, इसको डिवाइड करो 1:2:3 के रेशियो में. So Neeta must have received 35 plus 3x. Sita must have received 70 plus 6x, and Geeta must have received 105 plus 9x. Okay. You guys are here. चलो, very nice, awesome. And ये तो हो गया इनका like total assets का value. नीता सीता एंड गीता का गोल्ड कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है? नीता सीता गीता का गोल्ड डिस्ट्रीब्यूट हुआ है 2:3:4 के रेशियो में. टोटल 18x, 2:3:4, मतलब 4x, 6x एंड 9x, 8x, 4x, 6x एंड 8x. ये 4x गोल्ड है नीता के पास, so I can rewrite this as 35 minus x plus 4x, and this is the gold part. This is non-gold part. Okay, I can write this as 70 plus 6x. 6x is the gold part. 70 is the non-gold part. Yes or no? And this can be written as, okay, 8x है ना? तो 105 plus x plus 8x. This is the gold part. This is the non-gold part. Done. And voila. Again, I hope you guys do understand. ये गोल्ड वाला पार्ट है, क्योंकि गोल्ड का डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, किसके पास गोल्ड कितना है. ओके, तो केवल नॉन गोल्ड पार्ट और गोल्ड पार्ट. यू गाइस नीड टू अंडरस्टैंड दिस. नाउ one of them, again distribution, let's check out the distribution. One child got all the 3 flats. She did not get a house. Who can get all the 3 flats? Who can get all the 3 flats? All the 3 flats, matlab at least 90 in terms of non-gold, at least 90 lakhs in terms of non-gold, which is possible only with Geeta. So Geeta got 3 flats. In this case, Geeta got 3 flats. क्योंकि सीता के पास 70 का नॉन गोल्ड एसेट है और नीता के पास 35 से कम का नॉन गोल्ड एसेट है, तो 3 फ्लैट किसको जाएगा? गीता को जाएगा. 3 फ्लैट विथ गीता. ओके, एंड तो 3 फ्लैट इज टेकन केयर ऑफ. दिस हाउस विल गो टू सीता ना, क्योंकि हाउस कैनॉट बी असाइंड टू नीता, हाउस कैनॉट बी असाइंड टू गीता एज वेल. सो नीता विल हैव हाउस plus 20 in form of bank deposit. Yes or no? चल, और एक जो फ्लैट है, ठीक है, एक फ्लैट किसको जाएगा? एक फ्लैट जाएगा आपको नीता को. एक फ्लैट जाएगा नीता को. दिस अच्छा, one child other than Geeta got 30 lakh in bank deposit. Okay, ये मैं मिस कर दिया. One child other than Geeta, इसको थोड़ा सा ना. Somebody got 30 in bank deposit other than Geeta. Somebody got 30 in bank deposit other than Geeta. Other than Geeta, Sita got 20 in bank deposit. So, like Neeta must have 30 in bank deposit. Neeta must have 30 in bank deposit. So this 35 minus x is 30. जो नीता के पास 35 minus x है, this is 30. This gave me x as 5. And then total number of coins is 18x. So 18 into 5. Answer to this question was 90. And with the same set of data, how much did Sita get in bank deposit? Sita के पास बैंक डिपॉजिट में कितना है? Sita के पास बैंक डिपॉजिट में 20 है. Sita has 20 in this case in bank deposit.
So answer to this question was 20. Complete set. Welcome, Chirag. Chalo. So we're done for this session. एक important चीज guys, we are offering this Assure subscription, wherein अगर आप एक साल के लिए Academic सब्सक्राइब करते हो and IM में select होते हो, तो we refund 100% of the fees, or else नहीं होते हो तो एक साल का सब्सक्रिप्शन हम एक्सटेंड कर देते हैं completely free of cost. Check it out. These are the plus and Academic subscription benefits. You guys can check this out as well. So having said that, signing off from this session, we'll meet again in next session. If you wish to connect with me for any of the reasons, you can reach me out through my Telegram channel by scanning this QR.